आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। From non-oil imports, which saw a contraction of 4.4% during the first half, against an increase of 19.1% during the same period last year. So if you go by that, it's been a 23% contraction on a year-on-year basis. The marginal increase in exports and a healthy growth in remittances also helped in containing the current account deficit. The financing of the current account deficit nevertheless remained challenging, as the private, which is foreign direct investment, and private loans and official inflows were insufficient to completely finance the deficit. Thus, a significant part of the current account deficit was managed by using the country's own resources, which reduced the state bank's net liquid foreign reserves to US $7.2 by end of December 2018. However, the realization of bilateral official flows in the last few days has helped increase state bank's net liquid foreign exchange reserves to $8.2 and the country's foreign exchange reserves to $14.8 billion as of the 25th of January. In conclusion, the Monetary Policy Committee noted that the impact of stabilization measures implemented so far is gradually unfolding, and confidence is improving amidst reduced economic uncertainty. But one, the fiscal deficit is yet to show signs of consolidation despite a reduction in PSDP spending. Two, although a gradual improvement in current account deficit is visible, it still remains high. Three, a marked shift in the pattern of government borrowing scheduled banks to state bank entails inflationary concerns. And four, even as stabilization measures gradually work through the economy, underlying inflationary pressures persist. Based on the above, and after detailed deliberations, the MPC decided to raise the policy rate by 25 basis points to 10.25% effective 1st of February 2019. Thank you. The floor is open now for Q&A. Sir. From the so the reasons that you have recorded for increase in the discount rate, isn't it kind of contradictory statement in a sense? Past 1 year, we have now raised 450 basis points, and the rupee has been devalued by 32%, and yet this year current account deficit is the highest in the given period. It is only 4.4% lower than the comparative period. You are talking about $13 billion by end of fiscal year. So what is the contradiction in the economic fundamentals that your measures are not working as they should have been worked? Secondly, on the issue of the 25 basis, during your conversations with the IMF and the other international lenders, they the increase like 25 basis point or 50 basis point can help to achieve the objectives that are targeted by the state government. देखिए, आपने अपने दूसरे सवाल में पहले सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। देखिए ना, मैं आपसे देखिए, बात ये है कि हम ये कह रहे हैं और बड़ा क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए उनका इफ़ेक्ट है। अगर आप नॉन ऑयल इंपोर्ट्स को देखें तो उसमें ईयर ऑन ईयर 23% की कमी आ चुकी है, 23.5% की, और आपकी जो जहाँ 20-22% से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था वहाँ 4.4% से कम हुआ है। तो अगर आप उसका इम्पैक्ट देखें, ये कैसे इम्पैक्ट आ गया? ये इम्पैक्ट इन पॉलिसी मेजर्स की वजह से आया ना इम्पैक्ट। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये देखना है कि जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको देखना है और ये फैसला करना है कि ये जो मेजर जिन्होंने काम किया है इनको मज़ीद आगे ले जाने की ज़रूरत है, और एक मैसेज भी देने की मार्केट को ज़रूरत है कि हम बहुत सारा वी आर ऑलमोस्ट एट द पीक, और हम अपने 25% बेसिस पॉइंट के साथ ये मैसेज दे रहे हैं कि ये एक चीज़ें कर रही हैं, ये वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होंगी, और इसके साथ साथ हमें जो है ये एक हम जो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं उस पॉइंट पे हम जा सकेंगे। जहाँ तक आपका IMF का ताल्लुक़ है, उनके जो तकाज़े हैं वो अपनी जगह पे हैं। जब हम प्रोग्राम में जाएंगे तो उन तकाज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे और कुछ हम उनकी मानेंगे, कुछ उनसे मनवाएंगे, और उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि हमने किस लेवल पे जाना है। आपको पता है वो तो डू मोर वाले एक है, वो होता है, वो चलता रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से देखेंगे और उसके बाद उनको ये दिखाएंगे कि इन जो हमने फैसले कर चुके हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ है और उसकी बेसिस पे मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू जी। Sir, this is Mehtab. I work for the news. Sir, my question is, as you know, the net borrowing from the State Bank of Pakistan
is increasing, which shows that the commercial banks are not ready to lend the government. Don't you think, because you have already mentioned that the current account deficit is showing improvement, the inflation is almost in the same level which you have targeted. Don't you think that the commercial banks are dictating the monetary policy and they were expecting that you are going to hike little bit or more discount rates? Not really. I'm sure you have seen the results of the last auction that was held of the PIBs, and the participation from the commercial banks was considerably higher than the amount which was to be bid for. I think it was almost like 4 times to 5 times higher than the amount that was being bid for. And that very clearly shows the mind of the bankers. The banks now clearly thought that we had peaked out. So this is not truly, I think it's a wrong impression if anybody is getting this impression that it's the banks dictating it. Banks were willing even to borrow at that level. So what we are looking at not today, we are also looking at a forward-looking approach and see how is it that is going to unfold in the next 2 months, next 4 months, next 6 months. Sir, Zahir Abbasi from Business Department. I have 2 very small questions. One is that so far you have increased the discount rate. What would be the impact? Have you calculated what would be the impact of this increase in discount rate on the debt servicing? And second question is that you have been able to reduce current account deficit major. But what we have largely seen, these are short-term measures. These are either borrowed from friendly countries, those who have contributed to reduction in the current account deficit. Is there any permanent or any long-term plan to contain this challenge? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन तो इसकी यही है कि रुपये की एडजस्टमेंट है जो कि सब्सटेंशियली की गई है. व्हाट डू यू डू? अगर आप देखिए ये अगर आपका रुपया आप महंगा रखेंगे तो व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आप सब्सिडाइज कर रहे हैं इंपोर्ट्स को, एंड देयरफॉर इंपोर्ट्स शैल ग्रो, और आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक उसके ऊपर इजाफी बोझ डाल रही हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू फाइंड अ ट्रू इक्विलिब्रियम, and that equilibrium is what the market determines, and once you have that is what is going to cut down on your imports. आप ये देखिए कि हम ये ऐसी बात नहीं कर रहे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नई इंडस्ट्री बनेगी. हमने we have done this study in house about our research department also, that an overvalued rupee also leads to some sort of a deindustrialization in Pakistan. You know, by adjusting it by 30% we have made our own industry 30% more competitive than before. ये आप ये देखिए, मैं ऐसे एक मिसाल देता हूँ. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लीजिए, आप हर जगह जाएं, आपको ये जी स्पेन की टाइल है, ये वर्साची की टाइल है, ये इटली की टाइल है, ये चाइना की टाइल है, ये इवन इजिप्ट की टाइल्स मिल रही है. मतलब मैं एंड आई कीप ऑन कोटिंग दिस एग्जांपल, व्हेन माय पेरेंट्स आर बिल्डिंग देयर हाउस तो सब ने मास्टर की टाइल इस्तेमाल करते थे. आपने अपनी इंडस्ट्री को या स्टाइल की टाइल इस्तेमाल करते थे या कोई और टाइल, आपने अपनी इंडस्ट्री को डिसएडवांटेज किया हुआ था. तो लॉन्ग टर्म में तो ये यू डोंट हैव टू गो फॉर फ्यूचर्स इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. आपकी अपनी इंडस्ट्री चल रही है, जब आप उसको एक फेयर कंपटीशन देंगे तो वो खुद की उठ खड़ी होगी. जब वो उठ खड़ी होगी तो आपकी डोमेस्टिक आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी और आपकी इंपोर्ट्स भी कम होंगी. सो आई थिंक दिस इज़ यही है एक सस्टेनेबल तरीका जो उसको गोइंग फॉरवर्ड. और जो पार्ट है आपकी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दिस द क्यू ब्लॉक डज दैट. इट्स प्रॉबली 1% अगर हम बढ़ाएं तो उस दिन कोई शायद मेरा ख्याल 100-150, मुझे डोंट होल्ड मी टू दिस नंबर्स, बट देयर इज कुछ उसका इंक्रीज़ है. 25 बेसिस पॉइंट्स इसकी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद 20-25 बिलियन का पड़े, बट डोंट होल्ड मी टू दिस नंबर्स. जो है दिस फॉर द क्यू ब्लॉक टू. मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट आपने बताया कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक कर रहा है, लेकिन ये बताएं कि हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट इस फिस्कल ईयर की कितनी है? असद फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो तो कहते हैं कि हमने किस साल की जो नीड है वो पूरी कर ली है. डू यू थिंक, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू? और दूसरी चीज़ आप ये बताइएगा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बताया कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दूसरी तरफ कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम इस साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करेंगे. तो ये आपके स्टेटमेंट में और उनके स्टेटमेंट में, सॉरी जो दोबारा रिपीट कीजिएगा. उन्होंने कहा है कि इस साल हम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमारा टारगेट है कि हम 26 बिलियन
डॉलर्स क्रॉस कर सकते हैं। तो उनके स्टेटमेंट और आपके स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो आपके ख्याल में कि वो एम्बिशियस टारगेट है या आपके ख्याल में वो किया जा सकता है? जी जी, देखिए करंट अकाउंट का इस वक्त जो है हमारे ख्याल में जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर वर्कआउट हो रहा है वो इट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 13 to 14 बिलियन डॉलर्स जो है इस वक्त का जो नंबर हम एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके लिए कि जो इस साल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको भी अंदाज़ा है, सम ऑफ दोज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड and some of those amounts have already been deposited into our interstate bank. What we are looking forward is another $2 billion from UAE. Then there are the oil facilities that are going to trigger in. There's some commercial loans that the Q block has lined up. So I think that yes, as far as this year's current account is concerned, the financing needs have more or less been plugged. आपका जो दूसरा सवाल था उसके अंदर आई थिंक इट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ नुआंस। जब आप बात करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की और 0.9% ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इसमें मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में ये सिर्फ कैप्चर कर रहा है आपको स्पिनिंग और वीविंग कैप्चर कर रहे हैं, तो स्पिनिंग और वीविंग में कमी आ रही है। लेकिन आप अगर अपनी हाई वैल्यू एडेड जो है एक्सपोर्ट्स की तरफ देखें तो उसके अंदर इजाफा आ रहा है, जिसके अंदर और उसके अंदर हमारी प्राइस में शायद उतना इजाफा नहीं आ रहा लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा इजाफा आ रहा है। ये मेड अप्स हैं, ये जो आपके हैं फैब्रिक इसके हैं बेडशीट्स हैं, ये और गारमेंट्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं और जिसके अंदर इजाफा आ रहा है वो उसमें LSM की जो नेगेटिव ग्रोथ उसमें वो कैप्चर नहीं हो रही हैं, बट दैट्स एन एरिया विच इज़ ग्रोइंग। सिमिलरली ये भी हो रहा है और इसको हमने डेप्थ देखा कि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ डोमेस्टिक ग्रोथ तो कंस्टेंट हो रही है लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। मसलन सीमेंट के अंदर डोमेस्टिक जो डिमांड है उसमें कमी आई है, एक्सपोर्ट में अंदर कंसिडरेबल इंक्रीज़ आई है। सो ये इसका उसको अगर आप अनफोल्ड करेंगे तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है। ये मुमकिन है कि कुछ आपकी स्लो डाउन हो डोमेस्टिक लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़े, जिस तरह मैंने आपको 2 सेक्टर्स की मिसाल भी दी है। जी जी तो दूसरी तरफ आपने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, इससे इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी या डिस्करेज होगी ये थोड़ा सा बता दें। और बैंक का ऑलरेडी कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है ना दिस इज वेरी हाई, 25% के ऊपर कंज्यूमर फाइनेंसिंग पहले ही बैंक कर रहे हैं, तो अब मजीद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने से लोगों को इसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट क्या होगा? दूसरा ये आज के कारण निर्धारित का वॉल्यूम भी बता देखिए इन्फ्लेशनरी तो हम तो इसको डिसइन्फ्लेशनरी प्रेशर डालना चाहते हैं ना। दूसरा हम कंजम्पशन को क्यों कंट्रैक्शनरी पॉलिसी क्यों फॉलो करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं कि कंजम्पशन कम हो। तो अगर कंज्यूमर फाइनेंसिंग कम हो रही है तो उसमें कोई बात नहीं। अब जो मैंने आपको नंबर्स दिए कि जो इंडस्ट्री का क्रेडिट ऑफ टेक है वो बढ़ रहा है जी, विच इज़ द गुड थिंग, और अगर वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ बढ़ रहा है तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए लिहाजा द होल आइडिया इज़ ऑफ अ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये है कि आप कंजम्पशन कम करें, सेविंग की तरफ लोगों को ज़्यादा राग़िब करें, तो ये उसका मकसद है। दूसरा आपका सवाल क्या था? रिजर्व्स आज है मेरा ख्याल है आई थिंक बिल्कुल क्लोज टू 8.2 के करीब क्लोज करेंगे इंशाल्लाह आज। सर आपने कहा कि जो ओवर वैल्यूएशन है उसने जी 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 उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिछले 4-5 साल में कौन रिस्पॉन्सिबल था? एक और दूसरा ये है कि पिछले 20 दिसंबर से 8 जनवरी के दरमियान कोई बड़ी रीपेमेंट नहीं थी एक्सटर्नल, तो रिजर्व तकरीबन 1.1 बिलियन डिक्लाइन हुआ, क्या वजह? नहीं देखिए रीपेमेंट्स थी जी, गवर्नमेंट के इस कमर्शियल बोरोइंग की रीपेमेंट्स होती थी जी, और हम मार्केट के अंदर इंटरवेंशन भी करते हैं जी। किस दिन हम मार्केट में इंटरवेंशन करते हैं किसी दिन हम मार्केट को सपोर्ट करते हैं, किसी दिन हम मार्केट से मॉप अप करते हैं जी। वो आपको मैं तफसील फिर बता दूंगा, लेकिन बहरहाल इसके अंदर मैं आपसे बताऊँ कुछ, और इफ़ यू वांट कुछ डिफेंस की पेमेंट्स जो हमारी जाती हैं, कुछ बड़ा हिस्सा जो था गवर्नमेंट की डेट्स से रीपेमेंट थी वो गया था जी। तो इसलिए सारा ये मिलजुल के इसके से ये नंबर आते हैं। बट अगर आप देखें पिछले चंद दिनों से देखें, 10-12 दिन से 15 दिन से देखें तो कुछ बेहतरी आ रही है, और हम आज इंशाल्लाह मार्केट से पैसा उठाएंगे भी जी। सर ये इकराम होती 92 न्यूज़, you are telling me that you're telling the entire gathering that it's a situation of deceleration, inflation, unfettered borrowing,
deficits on both the public finance front and other fronts. In this situation, you are asking the government to be fiscally proactive. Apart from the proposal that you are giving, could you take some potential steps on the policy side to determine something there so that the government doesn't go for heavy borrowing and the deficit don't go sky shooting? دیکھیے ہم تو پالیسی مانیٹری پالیسی ہی کرتے ہیں, فسکل پالیسی گورنمنٹ کا کام ہے جی. تو ہم تو ان کو صرف ایک بتا سکتے ہیں جی کہ یہ ایشوز ہیں اور دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. It's for the government, of course. I'm sure they're doing that. They've cut down on the PSDP. They've come out with a rationalization of taxes and tariffs also, and we hope that these will give positive results. But still, the fiscal deficit continues to be high. So this is the fact. This is the reality. And we have to, if we want stability in the economy, we have to bring down both the fiscal deficit and the current account deficit. While there is some progress, good substantial progress on the current account deficit side, we need to probably do more on the fiscal side also. دیکھیے سر, یہ تو ان کا کام ہے نا. I'll actually be preempting them, or I'll be this is their mandate. I should not be saying what they need to do. یہ ان کا اختیار ہے. ایک منٹ ذرا دو چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں سر. یہ زر مبادلہ کی حد تک آپ چائنا سے کیا آپ کی توقعات ہیں؟ اور میرا تھوڑا سا دوسرا سوال یہ ہے کہ یکم جولائی 2018 سے اب تک کتنی روڈ چھاپ پر کتنی ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی ہوئی؟ دیکھیے وہ تو میں نے آپ کو نمبرز بتا دیے ہیں. جتنا گورنمنٹ کی بوروئنگ ہوئی تھی وہ سارے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنی بوروئنگ ہوئی تھی. اس کے اندر مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے اندر جس طرح چائنا کا تعلق ہے جی, چائنا ہمارا ایک بہت ہی عظیم دوست ہے. اٹس اے ٹرو اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈ, اور وہ ہمیں سپورٹ کرتا رہا ہے. اور آپ کو وہ نمبرز آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں جس طرح سپورٹ کے آتے ہیں. وہ کمرشل کے ساتھ بھی کر رہا ہے, وہ ڈپازٹ کے ساتھ بھی کر رہا ہے, وہ کرنسی سواپ کے ساتھ بھی کر رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کرتا رہے گا جی. دیکھیں انورڈ ریمیٹنسز کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو الحمدللہ 10% گرو کی ہیں, اور ہم اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو آؤٹ ورڈ پیمنٹ ہوتی ہیں وہ ہم نے بینک کا ایک سینٹرل بینک کا طریقہ کار ہے. آپ اپنے بینک کے تھرو سینٹرل بینک کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ اس کو باہر لے کے جانے کی جو ہے. اگر جس دن ہی آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے اسی دن ہی اجازت مل جاتی ہے. اینڈ وی ڈونٹ ہولڈ بیک اینی تھنگ. یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. اٹس اے پیبل آن آر پارٹ اینڈ وی ڈیلیور آن دیٹ. کوئی ریسٹرکشن نہیں لگی ہوئی جی. دیر از نو ریسٹرکشن جی. لیٹ می ایشور یو all with that we expect you to do that. When you do apply, your bank must come up with full documentation. اگر ڈاکومنٹیشن میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو کیس آپ کو واپس آپ کے بینک کے تھرو آ جاتا ہے. سو آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کیجئے, آپ کے جو پیسہ ہے جو تفصیلات ہوں گی وہ ضرور جائیں گی انشاءاللہ. سوال میرا یہ ہے کہ 6 مہینوں کے اندر 7 مہینوں کے اندر جولائی سے جنوری تک ایکسٹرنل بورنگ گورنمنٹ نے کتنی کی ہے اور کتنا پے بیک کیا ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ اس کا ڈیفر پیمنٹ میں اور ملنا شروع ہوا ہے, اس کے اوپر ریٹ اور انفلیشن کیا ہوگا, اس کا ریٹرن کیا ہوگا, اور اس سے کتنا جو ہے آپ کو ریلیف ملے گا. دیکھیے جہاں تک تو تعلق ہے نا آپ کی ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کا تعلق ہے, وہ منسٹری آف فائنینس اوکے اور منسٹری آف پیٹرولیم کے جو وفد تھا وہ گیا ہوا تھا سعودی عربیہ, وہ کل ہی واپس آیا ہے. الحمدللہ وہ فائنلائز ہو گیا ہے. اس کی فارمل سائننگ جب شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے 16 فروری کو, اس دن ہوگی. تو یہ دس از ناؤ اے ڈن ڈیل. سو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 16 فروری کے بعد جو نئی ترسیلات ہوں گی آئل کی, وہ اس آئل کی فیسلٹی کے تحت ہوں گی. اس کے جو ریٹ ویٹ ہیں وہ آپ منسٹری آف فائنینس سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ وہ I'm sure وہ چاہیں گے کہ 16 تاریخ کے بعد آپ کو وہ بتائیں کہ کن ریٹس کے اوپر یہ آ رہا ہے. مجھے اب آف ہینڈ یار یہ نمبر یاد نہیں ہے, سو ایکسکیوز می آن دیٹ. آئی ڈونٹ وانٹ. اچھا فادر صاحب سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے
جی سر سکوپ بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ جی جی اور کمرشل بینکس کے جو تحفظات تھے اس حوالے سے بتائیے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو فائنانس منسٹری کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف انرجی جو ہے پاور اور فائنانس ڈویژن نے یہ مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کو کیسے ہینڈل کریں گے. جو جہاں تک ان کے حقوق ایشو کرنے کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو اسلامی بینکس ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ کو اسلامک بینک سے پاس تو اس وقت لیکوڈیٹی زیادہ ہے, تو لہٰذا یہ ان کے لیے ایک اٹس اے ویلکم اسٹیپ فار دا اسلامک بینکس دیٹ دس حقوق از بینگ ایشوڈ. تو ان کی کوئی لیکوڈیٹی جو ہے وہ کہیں انویسٹ ہو جائے گی, سو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر جو ہے. منی بجٹ سے جو ہے یہ ایس ایم ای سیکٹر, ہاؤسنگ اور ایگریکلچر کے لیے جو ہے بینکوں کا جو لون پورٹ فولیو ہے اس پہ جو ٹیکس ہے اسے کم کیا گیا, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جو بینکوں کا کتنا آپ نے رکھا ہے پورٹ فولیو کے لیے کتنا فکس کیا ہے کہ کتنا ان سیکٹر میں کتنے پیسے وہ دیں گے جی, اور جو سارے ان کو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا. جی میں پہلے کلیئر کر دوں. دیکھیے دا سینٹرل بینک آلسو, اسٹیٹ بینک آلسو, ہمارے جو ہیں 3 پرائرٹی سیکٹرز ہیں, اور وہ 3 پرائرٹی سیکٹرز ہیں ایس ایم ای ہے, ایگریکلچر ہے اور لو کاسٹ ہے. ایگریکلچر کی مد کے اندر ہم نے پچھلے سال 37% کا اضافہ کیا جو کہ لینڈنگ تھی ٹو بینکس, اور یہ 976 بلین پہ پہنچ گئی ہے. اس سال کا ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ 1250 بلین کا ہے.